My dear students, three Chinese scholars, philosophers, management thinkers. Number one, Confucius. Number two, Sun Tzu. And number three, Tao Tzu. Let's look one by one. What are their contributions in developing the thoughts of management and administration as even we see it today? Confucius, about 500 BC, to be exact 551 to 479 BC. He was a scholar. Even today, he is known as a teacher and a mentor among the Chinese community. In fact, he was a courtier. He was known in the courtier as a Master Kong because of his scholarly contributions. In other words, he was associated with the court of the king. He was known as a man of wisdom. And in fact, to solve the social problems of the society, problems related to civic administration, he had an idealist behavior. इसका मतलब यह है कि रियलिटी को वो एक खास मॉडल के पर्सपेक्टिव में आइडलाइज करते थे और चाहते थे कि चाइनीज सोसाइटी के अंदर जस्टिस हो, ऑर्डर हो, पीस हो और लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करें, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनका हाथ बटाएं. It is a philosophy through which order and peace can be restored in the society. और आज भी चाइनीज सोसाइटी में कन्फ्यूशियस का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है. उनकी टीचिंग्स को डिस्कस किया जाता है और नई थ्योरीज जो अब डेवलप हो रही हैं. देखिए, वेस्टर्न मैनेजमेंट थॉट रिलेटेड थ्योरीज, दे स्टार्ट कमिंग आउट say around 1950s. At the most, Max Weber, around Second World War. And these are all theories developed afterwards. लेकिन ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 3-4 हजार साल पुरानी. उसके बावजूद आज तक कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स चाइनीज फिलॉसफी में, चाइनीज सोसाइटी में, चाइनीज स्कॉलरली कंट्रीब्यूशंस में आपको नजर आएंगी. Not only in China, and Far East societies, Korea, even up to Japan, and the other Far Eastern countries, you will find that the society and their systems and their administration is influenced by the Confucius philosophy. Confucius takes the side of the groups. Note कीजिए इस बात को. Confucius, in his teaching of management and administration, he prefers and takes the sides of the groups over individuals. That's a basic difference between the Western and the Confucius philosophy. आगे चल के हम देखेंगे कि Western tradition में, Western theories में, they are individual focused. Self पे high focus है. Confucius की philosophy में, उसके concepts में, self is downplayed. So in other words, individual should sacrifice for the cause of groups, for the cause of society. ये उसका कहना है. और चाइनीज के अंदर, जापानीज के अंदर अभी भी आपको नजर आएगा कि जहां इंडिविजुअल महसूस करता है कि उसने सोसाइटी और उसके नॉर्म्स को डिस्टर्ब किया किसी भी वजह से, वो सोसाइटी के मुकाबले में अपने आप को कुर्बान कर देगा. जापान के अंदर यह आपको चीज बड़ी कॉमन नजर आएगी. स्पीकर्स एंड Confucius and the people who speak about Confucius philosophy, they always speak of responsibilities of the individuals. Of course, there are rights of the individuals, but they speak about the responsibility of the individual to the group rather than their personal rights. Yes, of course,
personal rights are also protected. They would ask in their philosophy that children should obey their parents. बहुत सारी टीचिंग आपको कन्फ्यूशियस की और दूसरे मजाहिब के साथ मिलती हुई नजर आएंगी. Children should obey their parents. Pupil, students, they should regard their teachers. Ministers should obey their kings. And Chinese family business model is always discussed widely in academics. Confucius argued, it's a very important point. Confucius argued that the virtues created by wealth, virtues should create the wealth. It should not be the other way around, that the wealth should create virtue. तो नेकी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए material world के ऊपर. He believed in regulated economy, of course, but whoever pursues business in this world must have a system. Compare कीजिए 500 BC में एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि बिजनेस एंड सोसाइटी शुड हैव ए सिस्टम. क्या ये वही थॉट नहीं है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक टेलर ने अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में दिया? इट्स द सेम थिंग. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव an idea of 400 BC later led to the scientific management.